Afternoon, everybody. Welcome to the ICAI's Board of Studies live virtual coaching classes. Myself, Dr. Ravi, Faculty, Board of Studies. Today we have with us Foundation Subject Faculty CA Gaurav Chopra also, along with me. Today, our topic is at foundation level, business mathematics, logical reasoning, and statistics. This is called actually right now quantitative aptitude paper. And this is a 100% practical oriented paper. And now I request CA Gaurav Chopra to throw some light on the topic about the ratio and proportion, indices and logarithms chapter actually. Now I request Gaurav Chopra ji, please talk about the what is ratio and what is proportions and indices and logarithms, and what is the importance and of the topic and how many marks generally it arises in the examination point of view also. We will discuss one by one based on the students' requirement, and we will guide the students also how to face this examination also, upcoming examination also. Well, and further, it is a very scoring paper and how to handle with the help of us actually. And now I hand over to the Gaurav Chopra, please. Thank you so much, sir, for the warm welcome. So good afternoon, everybody, and very good afternoon. So welcome, everyone. And in today's class, what we are going to do is the ratio, proportion, indices, and logarithm. This is basically our first chapter. And what is the overall weightage of this chapter? Exam में आप कैसे ज़्यादा marks relating to these topics. All right. So चलिए फटाफट से शुरू करते हैं. Let us begin. Now, let us summarize the first topic, that is a ratio, and then we're having proportion. And if you're having doubts relating to that topic, you can, of course, ask your doubts. You can post your doubts, and we will be discussing immediately, right? So, what is a ratio? Whenever we talk about a ratio, two values are available. One will be in numerator and other will be in denominator. Okay. So anybody who is writing on the screen, please, you have to stop that because it will be distracting everybody. All right. So you can erase this. And also the technical team, please take care of this. ताकि screen पे ये सारी चीजें visible ना हो. Right. Friends, please don't write on anything and it will be disturbed to the faculty also. Please concentrate on the what is required also. Okay. Please carry on. Thank you, students. So basically, what is simply a ratio? Ratio for it means we are comparing two quantities. Ratio simply means comparison of two quantities. So the first value is known as antecedent and the second value is known as consequent. So technical team, can you please remove this from the screen? Mr. Nishad, can you remove these lines? Can you please remove these lines which students has marked that? Is it possible? That lines, zigzag lines. This one. Please remove all these lines. Yes, Gaurav, actually, I am coming to the point actually. Let them actually, the technical team can do this kind of exercise. When ratios are used, general scenario we are asking about the students, general layman point of view,
where the ratios comparing like same kind of quantities or like same kind of things and the same kind of units only we are generally comparing. Can you throw some light on that topic? Just what is why general layman point of view also students can able to understand, please. So whenever we talk about a ratio, it even begins from our home, like that is especially from our kitchen. Like let's say we are preparing something, we are cooking something, and we are making, let's say, a chapati. So a chapati is basically made up of like many different ingredients. One is wheat flour, then second one is salt, and then water. Then what we are going to do we add all these things in the same quantity? क्या हम सारी की सारी चीजों को एक ही क्वांटिटी के अंदर मिक्स करके कंज्यूम करते हैं? ऑफ कोर्स आंसर इज नो, बिकॉज जितना आपने व्हीट फ्लावर लिया है उतना अगर आप सॉल्ट लोगे, इफ यू टेक सॉल्ट एंड व्हीट फ्लावर इन इक्वल क्वांटिटी, योर chapati will be too much salty. That means we need to have a defined set of ratio. So we can, let's say, define, we will take 10 grams of salt and 200 grams of wheat flour. सो रेशियो बिगिंस फ्रॉम आवर होम ओनली. घर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप रेशियो काम में लेते हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिर एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बहुत बार हमें कंपैरिजन करना होता है. मेनी टाइम्स वी कंपेयर इन द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर हम कैसे कंपैरिजन करते हैं कि एक पर्सन का आपने वेट लिया, दूसरे पर्सन की हाइट ली. All these two are not comparable, so you cannot find a ratio. So for getting a proper ratio, you must have the same unit. If you are comparing like which society is healthy, society A or society B, which is healthy, so you must have weight of both the societies. You must have average available from both the societies, and the most important thing is the यूनिट. यूनिट मस्ट बी सेम. जब तक आपका यूनिट सेम नहीं है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज, लेट्स से if you have to calculate a ratio between 45 seconds and 2 minutes, 45 seconds and 2 minutes, will the ratio be 45:2? No, it's a wrong, because the units are not same. So first thing is you have to make the units equal. Let's take 45 seconds and convert 2 minutes into seconds. Now, in 1 minute, how many seconds are there? Of course, everybody know 60 seconds. So therefore, 45 ratio 120. Now we can do some cancellation and get the required result. So we can cancel with the help of 5. So what we are getting 9 ratio 24. Further, we can again cancel with the help of 3. What we are getting 3 ratio 8. So this is the required result. So one of the most important thing is unit must be same. The first term is known as antecedent and second one is the constant. All right. So this chapter is basically a scoring chapter and a base chapter for the mathematics. हर किसी स्टूडेंट को ये एक आसान चैप्टर आना चाहिए. Now I am asking a question and आपको फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर करना है कि उसका करेक्ट रिजल्ट क्या है. Okay, I am giving you one question. My question is, you have to find out the ratio between 5 kilogram and 500 grams. ओके, सो आई वांट टू सी आप में से कितने लोग एक्टिव है एंड फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में. यस, वन आंसर इज गिवन. Kaustubh has given 10:1. Devendra has also given the same answer, 10:1. That's good. Yes, Abhinav, Anuja, Yash, Del, everyone has given the correct answer. That's nice. Good. So 5 kilogram, you have converted this into grams. So 5,000 and then ratio 500. So your correct answer is 10:1. Now, एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन आते हैं? लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स आल्सो. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है like this one, illustration number 7.
एक पर्सन का वेट है एट प्रेजेंट 56.7 किलोग्राम and he reduces the weight in the ratio of 7:6, then find the new weight. Then what is the new weight of Ronak now? So if he has reduced the weight, so what is the original weight? The original weight was 56.7. Now the given ratio is 7:6. The first term basically denotes his original weight and second will denote the new weight. So this 56.7 is equivalent to 7 units. Then what will be the value of 6 units? So simply divide it by 7 and multiply by 6. Okay, so simply आपको 7 से divide करना है, 6 से multiply करना है, you will get your answer. So your correct result is 48.6. Okay, nice. Now, let me ask you one question based on this. Let's say you have given a test and you have scored 70 marks. You have scored 70 marks at present. Now you have done again your revision and now your marks are changed in the ratio of 7:9. You have improved your performance and your marks are increased in the ratio of 7:9. Find your new marks. तो आपके new marks कितने हैं ये बताना है. Yes, Kaustubh has given the answer. Shreya, Dhruvit, Isha, Anushka. Great, great, very good. So everyone has given the correct answer, that is 90. 70 is equivalent to 7, then multiply by 9. You are getting 90 marks. Very good. Now, inverse of a ratio. What is basically the inverse of a ratio? Inverse का मतलब हो गया आपने क्या करना है? You have to interchange the values. A ratio B. Inverse means you have to write just opposite B ratio A. That is simply known as the inverse of a ratio. अब एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टीज यूज लेनी है ना. प्रॉपर्टीज आप सब लोगों ने पहले पढ़ी होगी, आई होप रिवीजन भी किया होगा, लर्न भी होगा आपको. नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट आल्सो. One is known as duplicate ratio. A property is known as duplicate ratio. Duplicate means what? एक से दो हो जाना. That means A will become A square and B will become B square. So you have to square both the terms. You have to square both the terms. So if 3:4 is given, then what will be the duplicate ratio of this? You have to find out the duplicate ratio. Anyone? Yes, Devinder, Seni, Abhinav, Akash, everyone has cricket. Yes. So most of you have given the correct answer. 3 Gaurav, square is 9 and 4 square is 60. Gauravji, sorry to Yes. interrupt you between that actually. Yeah, students are very familiar with these easy examples also. One Right. more, my request is just you are you can, if you're able to throw some the same kind of example with the help of in this example, like in the study material, like example like question number 20 and 21, these are all duplicate and sub-duplicate ratio related example. Can you solve these two examples? And students are all the times many queries received from these two questions related. Yes, sir. Throw on light on this and linking with that topic. Okay, sir. My request to you, please. Sure, sir. Fine. Fine. So let's move towards question number 20. The most common doubt. ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका डाउट पूछते हैं. So let me solve this. वैसे यहाँ सॉल्यूशन लिखा है बट फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके एक बार कंप्लीटली आपके सामने बताता हूँ. So let me remove this first. Okay. Now, question number 20.
what question number 20 is saying, P ratio Q is the subduplicate ratio of P minus x square and Q minus x square. Then find out the value of x square. Okay. Now, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑलवेज अरेंज द थिंग्स इन द गिवन फॉर्मेट। पहला स्टेप क्या है आपका, क्वेश्चन को अरेंज करो इन दैट फॉर्मेट। तो आपको पता है सब डुप्लीकेट मींस व्हाट, सब डुप्लीकेट मींस स्क्वायर रूट ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। Let's say if a and b is the ratio, then its sub duplicate will be square root of a and square root of b. All right. Now the question is saying the sub duplicate ratio of p minus x square and q minus x square is p is to q. That means you can write p by q. So for this you have to make it root of p minus x square. हमने square root क्यों लगाया है? Because the question is talking about sub duplicate ratio. तो जो भी आपका ओरिजिनल रेशियो है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, दैट इज नोन एज सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू p is to q. So you are writing p by q. So this is the first step. एक स्टेप आपने कर लिया, नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, remove the square root. So for removal of a square root, what we have to do, squaring both the sides, squaring both the sides. So p minus x square upon q minus x square is equal to p square upon q square. Next step will be the cross multiplication. So p into q square minus q square x square is equal to p square q minus p square x square. Now, क्योंकि आपको x square की वैल्यू फाइंड करनी है, you can take x square values on one side and other on the next side. So it will be p square x square minus q square x square. On the opposite side, we are having p square q minus pq square. Take x square as common. So what is left? P square minus q square. On the other side, we can take pq as common. So what is left? P minus q. Now there is one basic mathematical property of a square minus b square. That is a plus b and a minus b. So p plus q and p minus q. Now we can do some cancellation. So p minus q is getting cancelled. So therefore, the value, the result of x square is pq upon p plus q. So this is the required result. Okay. Gaurav ji, Yes, sir. can you please explain one more time? Actually, students quickly with the steps only. Sure. So let me explain one more time. The main thing in this question is the subduplicate ratio. Subduplicate means the square root of the given ratio. So let's say if a and b is the given ratio, then its subduplicate will be root a ratio root b. So in the similar pattern, we have to solve this question. Now this ratio we can write in the fraction form. The first term will come in numerator and second will come in denominator. So our first term is p minus x square and second term is q minus x square. So since we have to find out subduplicate ratio, therefore we are applying square root sign. So square root of this is equal to, now question is given that कि इसका subduplicate ratio कितना है, that is p ratio q. So therefore हमने क्या लिखा है इसको, p upon q. So this is the first important aspect कि पहला हमें कैसे उसको अरेंज करना है. After the arrangement, the next step is to remove the square root symbol. So for that we are squaring both the sides. So therefore we have done the squaring. Now after squaring, just do the cross multiplication. Okay, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया नेक्स्ट स्टेप में. जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब आपको मूव करना है टुवर्ड्स योर लास्ट स्टेप, दैट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. तो जब भी किसी की भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ब्रिंग दैट ऑन वन साइड
and all other constant on other side. तो x square को आपने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, रिमेनिंग वैल्यूज आर ऑन राइट हैंड साइड. फिर हमने क्या किया, x square is taken as common, x square को कॉमन लिया. So what is left? P square minus Q square. On the other side, PQ is taken as common, and what is left? P minus Q. Now applying the property of A square minus B square, we have opened the bracket and done the cancellation. And at last, we have got the result PQ upon P plus Q. All right. Thank you so much, Gauravji, for Thank you. nice explanation of this sum. And hope students are understand this question number 20. And now, sir, you can move to the about the duplicate ratio property. That a duplicate ratio means students are understood. And related to this p square equal to 660, this is the answer is coming. That is 21st and 18. My request to please throw on this slide. 21st and 18. Yes. Yes, sir. Okay. So question number 21. If 2s ratio 3t is the duplicate ratio of 3t minus p, 2s minus p ratio 3t minus p, then which of the following is correct? Now, as per the question, what we have to do this time? We have to find out the duplicate ratio. So duplicate means square. तो आपको पहले क्या करना है? Write the given ratio in the fraction form. Write the given ratio in fraction form. तो पहले हमने इसको कैसे लिखा? 2s minus p divided by 3t minus p. This is the fraction form. Now, question is talking about duplicate ratio. Just write square. Okay, this is the square. Now, the result is given in the question. What is the result? It is 2s ratio 3t. So 2s divided by 3t. Okay. Now, अब आपको find क्या करना है? तो क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बोला आपको ये फाइंड करना है. Question has given the 4 options, and now you have to check which of these option is correct. इनमें से कौन सा रिलेशन आपका ट्रू है? So what you have to do now? Do the cross multiplication and get the result. So let's solve this. Two s minus p whole square upon 3t minus p whole square is equal to 2s upon 3t. Okay, now we have to simplify this and we have to see which of the option is correct. Okay, so let's open a minus b whole square. You might be knowing the property a square minus 2ab plus b square. So 2s square will become 4s square basically. Then minus 2ab. So 2 into 2, 4s p, and then plus p square multiply by 3t is equal to 2s multiply by, now we have to again do a minus b whole square. So 9t square minus 6tp and plus p square. Okay, so let's do some multiplication. 4s square multiplied by 3t, it will be 12s square t minus 135 pt plus 3p square t is equal to, on the other hand, we are getting 25 multiplied by 9, it is 225 t square. Then, sorry, it is 2s. So 18s into t square, then minus 12 tsp and plus 2sp square. So all these we have done. Now, is there anything common? We have to find that.
and see which of the option we are getting. So option is in the form of p square equal to st. So we can find the result in terms of p square or in terms of p or in terms of 2p. So overall, we have to find the result in terms of p also. Okay. So I'm using both the languages. Some students are asking to use Hindi. Do not worry, I will use both the language. तो अभी तक हमने क्या किया है, डुप्लीकेट रेशियो के लिए स्क्वायर किया है एंड स्क्वायर करके उसको कंपेयर किया है विद द गिवन रेशियो. नाउ आफ्टर दैट वी हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है अभी. और अभी हमारा पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर. तो पहले हम पी स्क्वायर देखते हैं, क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं. तो एक तरफ हम पी स्क्वायर वाली वैल्यू को रखेंगे, तो 3p स्क्वायर टी माइनस 2sp स्क्वायर एंड लेट अस सेंड ऑल अदर वैल्यूज ऑन अदर साइड. दूसरी वैल्यूज को अदर साइड भेज देते हैं. 18st स्क्वायर माइनस 12tsp, then what else, minus 12s square t and minus 135, sorry, it is plus 135 pt. So let's take something common. What is common? p square is common. तो क्या बच जाएगा आपके पास, 3t minus 2s. Similarly, on the other side, यहां भी आप चेक कर सकते हैं क्या कुछ ऐसा कॉमन आ सकता है हमारे पास. तो 18st स्क्वायर एंड 12tsp, अगर आप इसमें चेक करते हैं, इज एनीथिंग कॉमन. सो यू कैन टेक 6 as कॉमन, st as कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट, 3t minus and what is left, 2p. And from here we are having we have written here 135. Yes, so t is common. आप t कॉमन ले सकते हैं and 125 and 135 is there. Sorry, 12 and 135 is there. So 3 के अकॉर्डिंग आप कॉमन ले सकते हैं. So it will be 3t. What is left, 4s square plus 45p. Now you have to see what we can cancel. अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल कर लेते हैं. Okay, some of the students are asking a different question. Yes, we will solve all your doubts, do not worry. Yes, so there was some error in 5 and s. So s and 5 में कुछ error हो गई, इसलिए वो आपको misprint दिख रहा है, s and p. And here also it was 3 into 4, 12 spt. So here again it will be 12 spt. So let's take the common properly, otherwise it will create some confusion between s and 5. 12 spt. Okay, so now you can see that this 12 spt and minus 12 spt both are same but having different sign. So you can cancel them. दोनों का आपने क्या किया, कैंसिल कर लिया. What is left, 18st square and 12s square t. So let's take common. 3st is common. What is left, 3t minus 2s. Now you can again cancel this and get the result, p square is equal to 3st. Okay, so let me explain one more time and summarize the question. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना था, डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना था. सो डुप्लीकेट रेशियो मींस स्क्वायर.
So 2s minus p का square divided by 3t minus p का square and it is equal to 2s upon 3t. तो उसको आपने किसके इक्वल किया? 2s upon 3t के इक्वल किया. नेक्स्ट स्टेप वाज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के सामने हमने a minus b का स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी. So bracket is opened. Here also bracket is open and then we have done the multiplication. जैसे ही आपने मल्टीप्लाई Gaurav, किया, we Gaurav, have, yes sir. Gaurav sir, this is 6ST. Yeah, Sorry sir. 6. ST, 6ST. Yes This is, sir. 6 is yeah, common. Yes sir. 6 will be the common. yeah. Then 6 3s are 18. Yes, Yeah, sir. 6 2s are 12. So we have opened the bracket and taken the common. So p square आ गया आपका one side and all other values are on the other side. After that, 3t minus 2s is common on both the sides. We have done the cancellation and got the required result. P square equal to 6st. Okay. Now let's try one more question. Sir, one more thing actually. Yes, sir. In the examination point of view only, also I am asking these kind of questions, asking in several times. That's why I am just asking question number 18. Question number Yes. 18 is also very logical related questions. Right, right. That is, can you throw some light on this question? Sure, sir. Please. So let's move on question number 18. 18 is a very good question again. So P, Q, and R. Let us understand the question very carefully. P, Q, and R are the three cities. Ye three cities available hai. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. So P and Q, जो city given है आपको, in the ratio given है 11:12. And between P and R, तो P and R का जो ratio given है, so we can write 9 and ratio 8. This is for P and R. Find out the ratio between Q and R. तो Q and R का ratio calculate करना है. Okay, so it's a very good question, interesting question. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको एक शॉर्टकट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं. उसका एक शॉर्टकट पैटर्न है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो P, Q, R. Now 11:12 given है P is to Q के लिए and 9:8 given है for P and R. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द कॉमन. कौन सा वैल्यू कॉमन है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में अवेलेबल है. सो P is available in both the ratios. That is 11:12 and 9:8. So P is available in both of them. Now, what is the way of solving this? Just multiply the first ratio by 9 and second ratio by 11 so that these two become equal. हम इन दोनों को equal बना सके. जब तक ये equal नहीं होंगे, we cannot compare the other ratios. So therefore, the shortcut way is to multiply the first ratio by 9 and multiply the second ratio by 11. Okay, so let's see what happens now. 11 into 9, it becomes 99 and 12 into 9 will become 108. On the other side, if we see 9 into 11 is again 99 and 8 into 11 will become how much? 88. 8 into 11 will become 88. Now, the required ratio will be 99, 108 and 88. So this is the ratio of P, Q and R. But we have to just find out the ratio between Q and R. So just compare 108 and 88. That's it. Just take the value 108 and 88. So you can cancel them. So let's do some cancellation and get the result. So cancel with the help of 4. 27 ratio 22. So option number B is your answer. तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं. तो
वे क्या है इसको सॉल्व करने का, जो भी आपका रेशियो कॉमन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. इफ p इज कॉमन, तो जस्ट मल्टीप्लाई द फर्स्ट रेशियो बाय 9 एंड सेकंड बाय 11. ओके, एंड आफ्टर दैट मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री. तीनों को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है. So take 99 from p, 108 from q and 88 from r. You get the combined ratio of p, q and r. Okay guys, any doubt in this question? Yes, so many of you have given the answer. That's good. So any more doubt you are having related to this topic? That is duplicate ratio, triplicate ratio. No? Okay. All right. Now, any more doubt in this particular exercise? You can comment and let me know. Exercise number 1A, if anyone is having the doubt. No? Okay, some people are asking, can we prepare from the recorded batch of June? Yes, of course, you guys can prepare from that because that is a complete course and you can easily prepare. And we will be taking your doubt session so that you can clarify all your doubts from these exercises as well. Okay. Okay, one student is asking about question number 25. Okay, so let me solve that also. So question number 25, the ratio between the speed of two trains is 7:8. This is a given ratio for the two trains. If second train runs 400 kilometers in 5 hours, find out the speed of first train. Okay. Now, the first thing is, what is the speed of second train? So speed is equal to distance upon time. Distance upon time. So for second train, distance covered is 400 kilometer and time taken is 5 hours. So speed will be 80 kilometers per hour. 80 kilometers per hour. Now, the simplest way to solve first train ratio, second train. Ratio is given 7:8. Now, actual speed of second train is 80. What will be the actual speed of first train? You have to calculate this. So if 8 equals 80, then 7 equals 70. Orally, you can do this. If not, you can do the cross multiplication also. So let's take this value as x. Now do the cross multiplication and get the result. So 7 into 80 divided by 8 is equal to x. So therefore, x is equal to 70. So 70 kilometers per hour is your speed. 70 will be your speed. Gaurav sir, Yes, sir. thank you. You have explained very well the important questions which are related to ratios also. Yes. With your experience and what are the kind of questions that are asking in the examination point of view also in the recent experiences? How many number of questions may ask related to ratios only? I'm talking about ratios. So You have normal, explained all kind of examples. With yes, sir. your experience, actually, you can throw some light on them, please. Yes, sir. So from my past experience, which I've seen in the exams, so normally a ratio from the ratio chapter, particularly a ratio chapter, on an average, one question is asked.
Very few times, even two questions may be asked, but normally one question is fixed from the ratio chapter and one normally from the proportion. So overall, these are the 2 marks which we can get from ratio and proportion. सो रेशियो के अंदर जो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो ज्यादा पैटर्न रहता है, वो आपका रहता है डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये कई बार आते हैं आपके पास में। एंड ऑल्सो ऑल्सो कई बार जो अभी हमने मिसिंग फिगर वाले किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक जो ट्रेन वाला भी हमने एग्जाम्पल किया है, 7:8 रेशियो गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, देन फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभार वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, बट यस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पैटर्न से आते हैं जो आपके यहाँ एक्सरसाइज में अभी हमने सॉल्व किए हैं। ये आपका पैटर्न रहता है। सो रेशियोज के बारे में हमने काफी अच्छे से भी डिस्कस किया है, एंड आई थिंक आपके जो डाउट्स है वो भी हमने लिए हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज आपके एग्जाम जून में है, तो आपको कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप फटाफट उसको सॉल्व करके एंड आगे बढ़ सकते हैं, एंड 1 to 2 marks आप सिक्योर कर सकते हैं। सर, कैन वी मूव टुवर्ड्स Thank you, proportion? Gaurav, for a nice explanation about this topic. And further, students may have any doubt, just please post here, or then further we can move to the proportion topic also. Yes, sir, you can move to proportions. Yes, sir. So, proportion. So proportion is basically the equality of ratio. तो proportion का मतलब है जब दो ratios equal होते हैं. Let's take A ratio B and on the other side we are having C ratio D. तो जब दोनों ratio equal होंगे, then they are said to be in proportion. So this is the basic definition, basic meaning of proportion. So I've written here A ratio B is equal to C ratio D. So in mathematical form, you can write A by B is equal to C by D. Or by using the cross multiplication, you can derive that AD is equal to BC. So this is the conclusion for proportion. If AD is equal to BC, A means the first term, D is the fourth term, whereas B and C are the second and third term respectively. So AD is equal to BC. This is the basic condition of proportion. Now, there is one common statement for this, that is the product of means is equal to product of extremes. Product of mean is equal to product of extreme. Mean का मतलब है middle वाली values. तो middle में कौन है? Second and third value is equal to product of extreme. Extreme मतलब दोनों corners. फर्स्ट वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू। तो इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स should be equal to product of extreme. So this is the condition of proportion. Now sometimes there are, let's say, only 3 values. So in that case, what we can do, let's say A, B and C are the 3 values, then we will compare B with A as well as B with C. तो middle term हम दोनों के साथ compare करेंगे, first term के साथ as well as third term के साथ. So it will become B square is equal to AC. तो ये आपकी condition बन जाएगी. Now this is the most important aspect जो एग्जाम में आता है. बहुत बार proportion में से इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, especially the missing figure types of question. So let's take, the question is saying 4:8 is equal to x ratio 12. Find out the value of x. x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है एंड ये क्वेश्चन आपको गिवन। तो सिंपली आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो 8x is equal to 4 multiplied by 12. Then just simplifying this, you will get x equal to 4 into 12 upon 8.
your result will be 6. So this is your missing figure 6. And let's take one more type having the 3 values. Yes, so everyone has given the answer. That's good. एंड वन मोर थिंग, अगर किसी ने अभी तक पहले रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखा एंड डायरेक्टली आज के सेशन में आए हैं, अगर आपने चैप्टर नहीं किया है और सीधा आज का सेशन कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन फॉर जून एग्जाम्स. जिन लोगों ने ये एक बार टॉपिक कर रखा है, रिकॉर्डेड सेशन आपने दे रखा है, एंड वी आर जस्ट टेकिंग द डाउट्स. ओके, सो 1 or 2 स्टूडेंट माइट बी देयर जो जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया है एंड डायरेक्टली आज डाउट सेशन में आ गए हैं, सो दे माइट हैव सम डिफिकल्टी. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं. 10x and 100, these 3 values are in proportion. Find out the value of x. ये 3 वैल्यूज किस में है? प्रोपोर्शन में है, एंड आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो फॉर 3 वैल्यूज b स्क्वायर इज इक्वल टू ac इज द फॉर्मूला. सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 multiplied by 100. So therefore your value will be x equal to root of 1000, or you can write 10 root 10. इवन आप अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं, यू विल गेट 31 पॉइंट समथिंग. Yes, so many of you have given the answer. Mahi saying 31.5. Devendra saying 31.6. Okay, good. So this is basically the proportion. Now, one of the most important thing again is the properties of proportion. तो proportion में भी बहुत सारी properties रहती है. The first property which we can say here is invertendo. Invertendo means we have to inverse the ratios. Let's say a and b is the given ratio. अगर a and b आपका given ratio है, तो inverse will become b ratio a and c ratio d will become d ratio c. दोनों को आपने क्या कर दिया है? Inverse कर दिया है. So a and b will change their places and c and d will again change their places. So therefore, the ratio will become B is to A and D is to C. This is known as invertendo. We are doing the inverse. Then there is one more thing which is known as alternando. Alternando means we are altering the middle 2 terms. हम middle 2 terms को क्या कर रहे हैं? Interchange कर रहे हैं. So B and C will change their position. So it will become A ratio C. A ratio C equal to B ratio D. Or you can write A by C is equal to B by D. Okay. Then the next property is about componendo. Componendo means adding one. दोनों तरफ, दोनों ratios में हमें क्या करना है? One add करना है. It is known as componendo. So if you add one, A plus B, A by B plus 1 and C by D plus 1. On simplification, we are getting A plus B upon B is equal to C plus D upon D. So this type of ratio is known as componendo. And if you subtract 1, if you subtract 1 from the given ratios, then it is known as dividendo. So A by B minus 1 and C by D minus 1. You are subtracting 1. So therefore it will become dividendo. So A minus B upon B ratio, or you can write equal to
C minus D upon D. So it is dividendo. Plus means componendo and minus means dividend. Some students are asking about session रोज live होगा. See, you will find all your updates on the BOS application. So accordingly, you can watch the recordings of those sessions as well as you will be having the schedule कि आपका live classes कब कब रहेगा. तो accordingly आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो जब भी आपको वहां पे दिखता है कि अभी इसका रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तो उसका आप रिकॉर्डिंग क्लियर कर लें so that you can ask your doubts in the live session. All right. Now both the things together. Now अगर कभी componendo and dividendo दोनों साथ में आ जाता है तो you have to do the combination of both of them. So combination का आपका रिजल्ट क्या होगा? A plus B upon A minus B. दोनों आ गए. Plus for componendo, minus for dividendo. And it will be equal to C plus D and C minus D. So this is the result for componendo and dividend. Then if there are like multiple ratios, बहुत सारे ratios given है, and you have to add all the numerators and divide by all the denominators, then it is known as addendo. Let's say A by B is equal to C by D is equal to E by F. So all these ratios are given. अगर आप addendo लगाते हैं, addendo means सारे numerators को add करेंगे divided by all the denominators. So your result will be A plus C plus E divided by B plus D plus. So in this way, you can write addendo. Now, let's take one of the most important questions जो एग्जाम में आता है और मैंने आपको यहाँ मार्क भी करके रखा है. Example number 2, very important, very good question. कैसे सॉल्व करना है इसको समझ लेते हैं. A by 3 is equal to B by 4 is equal to C by 7. Then एग्जाम में प्रूव नहीं लिखाएगा, एग्जाम में लिखाएगा फाइंड. तो ये दिस विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ A plus B plus C upon C is equal to dash and this will be your dash. यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा. सो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है. अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सो लेट मी bring one page. A by 3 is equal to B by 4 is equal to C by 7. अगर हम इसको पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं, सो लेट ऑल दीज वैल्यूज बी इक्वल टू के. तो a का वैल्यू क्या होगा? तो a बाय 3 को आपने k से कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k, c इज इक्वल टू 7k. ये सारी वैल्यूज आ गई. अब हमें क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर सपोज टू फाइंड आउट a प्लस b प्लस c अपॉन c. ये आपको कैलकुलेट करना है. सो लेट अस पुट द वैल्यूज 3k plus 4k plus 7k upon c. C is 7k. So therefore the result will be how much? 14k upon 7k. Your value will be 2. So 2 is your required answer. तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का. अब देखो ये आपने पूरा लिख के सॉल्व किया है. एग्जाम में शॉर्टकट लगाना है, आंखें बंद करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, बस मन में वैल्यूज होनी चाहिए. कैसे सॉल्व करना था? डायरेक्टली आप क्या करेंगे? 3, 4 एंड 7 तीनों को ऐड कर लो. टोटल आ गया कितना? 14. अभी डिनोमिनेटर में चेक करो क्या है. C गिवन है तो 14 अपॉन 7 आंसर इज 2. इन केस डिनोमिनेटर में A गिवन होता तो आप क्या करेंगे? तीनों का सम 14 डिवाइडेड बाय 3. अगर B गिवन होता तो 14 डिवाइडेड बाय 4. दैट्स इट. तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके पीछे लॉजिक क्या था दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद दिस सॉल्यूशन. ऑलराइट.
Then what are the questions now? Yes, Gaurav ji, Yes, sir. the same question, similar question is in the question number 20 there, na? The study material also. Yes, sir. Same question is there in here also. Yeah, question number 26. Yes, sir. 26. Yeah. Now, guys, you can solve this question orally within 10 seconds. 10 सेकेंड में आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो. वैल्यूज गिवन है आपको a by 4, b by 5 and c by 9. Just find a plus b plus c upon c. तो हार्डली 10 सेकेंड्स भी आपको नहीं लगेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा स्क्रीन पे. तो क्या करेंगे आप? फटाफट से बता दो आंसर कमेंट बॉक्स में. 4 plus 5 plus 9 upon the total is upon C is 9. Yes, so everyone has given the answer. Option number B, that is 2. Great, good going. All right, guys. Now let's solve one more variety जो एग्जाम में हमें देखने को मिलती है. That is question number 27. अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है कई बार. Let us understand this. Two numbers are in the ratio 3:4. This question has given the numbers are already in the ratio of 3:4. If 6 is added to each number of the ratio, तो 6 हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं किसमें? दोनों में. Then the new ratio will be 4:5. So 4:5 will be the new ratio. Then find out the numbers. तो आपको क्या करना है? नंबर्स कैलकुलेट करने हैं. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस फॉर्म द इक्वेशन. जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसी इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा. सो लेट द नंबर बी 3x एंड 4x. बिकॉज 3:4 है तो एक नंबर 3x होगा तो दूसरा नंबर 4x होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड 6 इन बोथ ऑफ देम. तो दोनों में आपने क्या किया? 6 को ऐड कर लिया. ओके, सो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. देन द रिजल्टेंट रेशियो, तो जो रिजल्ट आ रहा है रेशियो का, इट इज 4:5. दैट इज 4/5. तो हमने सिर्फ एक इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा है और कुछ भी नहीं किया. Now, what is the next step? Just find out the value of x. So, on cross multiplication, what we are getting? 15x plus 30 is equal to 16x plus 24. So, therefore, the value of x will be 6. But यहाँ पे आपका solution खत्म नहीं होता है. अब आपको find क्या करना है? Find the two numbers. तो दोनों numbers find out करने हैं. Original number क्या था आपका? तो original number was 3x. So 3 into 6, 18. And 4x. So 4 into 6, 24. So 18 and 4 and 24. This is your answer. This is your number. Okay. If you want, the same question can be done using options also. इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको कभी इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है, गो बाय ऑप्शन. कैसे करना है? क्वेश्चन ने बोला 6 ऐड करना इन बोथ द नंबर्स एंड 6 ऐड करने के बाद 4:5 का रेशियो आना चाहिए. तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में ऐड करते हैं 6, तो 14 plus 6 become 20 and 20 plus 6 becomes 26. क्या इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से 4:5 आता है? नो. ट्राई द सेकेंड ऑप्शन. 17 plus 6, 23 and 25. क्या ये 4:5 है? अगेन नो. Third option, 18 plus 6, 24 and 24 plus 6, 30. Now you can cancel with the help of 6. So 4:5. So therefore option number C is correct. So you can also go by options. Gaurav ji, Yes, sir.
According to this topic, proportion, what kind of questions generally asked in the examination? नॉर्मली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दैट इज अबाउट दिस इन्वर्टेंडो सॉरी जो आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, लाइक प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में जो मिसिंग क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल this one, question number 5, find out the fourth proportion. Question number 6, the numbers are in proportion, find out the value of x. तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इसके बाद एक और जो पैटर्न है जो हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, दैट इज कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, सब्ट्राहेंडो। ये सारे के सारे क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन है। तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू मिसिंग है, वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये पैटर्न एग्जाम में ज्यादा। एक और रिपीटेटिव क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मिडल वैल्यू। तो आपको मिडल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। लेट्स टेक 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 की हेल्प से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, छोटा सा पॉइंट है। मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मिडल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1.4, middle value is x, and third term is 5.6, 1.4x and 5.6। since there are three terms है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, b square is equal to ac। so therefore x square is equal to 1.4 multiplied by 5.6, and then you can get your answer। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 2.8। तो ये पैटर्न आपके एग्जाम में ज्यादा आता है फ्रॉम दिस टॉपिक प्रपोर्शन। एंड जो प्रपोर्शन का वेटेज अगेन रहता है, दैट इज अराउंड 1 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको उसका देखने को मिलता है। चलिए, और कोई डाउट किसी का प्रपोर्शन को लेके, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एनीवन हैविंग सम डाउट्स? नो वन? Thank you, sir. You can move to further about the logarithms, and this is a very important topic also. Yes, sir. So we should start first indices, sir, or logarithm? My view of point of view, logarithms is okay. Otherwise, you can start as you feel, whichever can complete quickly. Okay, sir. We will start with logarithm. Because logarithm students find difficulty. Yes. That's the major. Just right. They feel little bit difficult on these aspects. Right. So logarithm. सो लॉगरिथम ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको देखते ही स्टूडेंट के माइंड में फोबिया आता है, यार ये तो मेरे से कैसे होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक फोबिया बना लेते हैं और इस टॉपिक को छोड़ने की कोशिश करते हैं, बट नो, दिस टॉपिक इज इजी स्कोरिंग। थोड़े से ऑफकोर्स फॉर्मूले जरूर हैं, बट आप इसको स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न में चलते हैं, प्रॉपर फ्लो में चलते हैं। क्लासेस इन सब की रिकॉर्डेड आपकी अपलोडेड है, आप वहां से अच्छे से उसको गो थ्रू करेंगे, एवरीथिंग यू विल गेट क्लियर, है ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। तो सबसे पहले आता है इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक तरीका कि हम कैसे लॉगरिथम में चीजों को लिखते हैं, कैसे लॉगरिथम में उसको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, there is a number 2 to the power of 4 is equal to 16। ओके, तो 2 का पावर 4 हमें पता है, इसलिए हम 16 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बट अगर कभी ऐसा लिखा हो 2 का पावर 4.5,
2 का पावर 4.33, तो वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो लॉग का मेन पर्पस है टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। तो इसको 2 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 16 को लॉगरिथम में कैसे लिखा जाएगा? तो इसका वे है log of 16 to the base 2 is equal to 4। अब ये हमने कैसे लिखा है? तो सबसे पहले देखो 2 कहां है? 2 इज द बेस ऑफ 4, मतलब एग्जैक्टली बेस तो नहीं कहते हैं, लेकिन क्योंकि 2 के ऊपर 4 बैठा है तो हम उसको समझने के लिए ये कहते हैं कि क्या है, 2 4 के बेस में है, तो वो लॉग के भी कहां रहेगा? बेस में रहेगा, उसके चरणों में रहेगा। सो लॉग बेस में क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू 16। 16 को एक स्पेशल पोजीशन मिली है, तो जो स्पेशल पर्सन है उसको कहां बिठाएंगे? लॉग के पास में बिठाएंगे। तो लॉग ऑफ 16 बेस 2 एंड इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। तो 4 कहां था? 4 पावर में था। 4 पहले कहां था? पावर में था। एंड पावर को यहां पे मिलेगी एक अलग से सीट, पावर के लिए अलग से सीट है। तो log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। इस पैटर्न में हम नंबर्स को लिखते हैं। तो जो आपका फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और फिर इसको हमने लिखा है इनटू लॉगरिथम फॉर्म। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर। लेट्स टेक 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको भी आपको लिखना है इन लॉगरिथम फॉर्म। तो क्या करेंगे? log ऑफ 9, 3 कहां पे है? बेस में है, तो 3 को बेस में लिखेंगे, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। अब कई बार उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको लॉग में वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप क्या करेंगे? लॉग ऑफ 25 एंड बेस 2 is equal to, or you can write let's say base 5 and it is equal to 2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि 5 जो आपका बेस में है उसकी पावर में कौन आएगा? 2। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। so this is the way of writing logarithm to exponential or exponential to logarithmic form। okay, so one student is saying voice was not audible. Okay, it's audible. Good. Now the fundamental laws of logarithm जो है, इसमें 3 मेन फॉर्मूलेज हैं। ये logarithm का बेस है। अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग किया तभी आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल फाइंड डिफिकल्टी। सो क्या फंडामेंटल रूल्स है या लॉज है logarithm के? log m प्लस log n, अगर आप दोनों को ऐड करते हैं योर रिजल्ट विल बी log mn, प्रोवाइडेड द बेस शुड बी सेम। बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Let's say if I'm writing log 20 plus log 30, log 20 plus log 30, base I have written 10 and 10। So what will be the result? What will be the result? तो क्या हमारा रिजल्ट log 50 होगा या log 600 होगा? What will be the answer? Log 50 or log 600? 600 exactly. So it will be log of 20 multiplied by 30, that is 600 base 10। So log m plus log n is equal to log of mn। This is the first property। Second is for subtraction, log m minus log n। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? The result will be log of m upon n, log of m upon n। So let's take
log of 30 minus log of 20 base 10. So what will be your result? Log of 30 by 20. Log of 30 by 20 and then base 10. So in this way आप उस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं. All right. Third property is about n log m. So log of m to the power of n with base a. तो जो भी यहाँ पे पावर में है वो जंप करके कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा. So it will be n log of m base a. The power will jump forward. For example, if I have written log of 3 to the power of 4 base 10. So what will be your result? It will be 4 log 3 base 10. 4 log 3 base 10. So this will be your required result. All right. Then जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको सारी प्रॉपर्टी एक बार गो थ्रू करवा देता हूं, सो दैट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इट विल बी इजी फॉर यू. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी मींस कि लॉग ऑफ m with base b is given. Now अब आप चाहते हैं कि log m and log b दोनों अलग अलग वैल्यूज बन जाए, दोनों में क्या हो जाए? ब्रेकअप हो जाए. तो इसको हम और क्या बोलते हैं? ब्रेकअप प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. m and b का क्या हो गया? यहाँ पे ब्रेकअप हो गया. सो यू कैन राइट इट डाउन log of m डिवाइडेड बाय log of b. लेकिन दोनों का बेस कॉमन रहेगा चाहे कुछ भी हो. तो लेट्स राइट द कॉमन बेस a. तो log m base a divided by log b base a. So let's solve some question. कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो पैटर्न एग्जाम में आता है उसको हम सॉल्व करते हैं. देवेंद्र सैनी इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन. आप प्लीज इसको हटाएं, रिमूव करें देवेंद्र सैनी. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. 6 अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, देखने को मिलता है. लेट अस अंडरस्टैंड. 6 is 2 log of x is equal to 4 log of 3. 2 log x is equal to 4 times of log 3. Find out the value of x. x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. So let's take some space. 2 log of x is equal to 4 log of 3. अब ये आपका क्वेश्चन है. सो जो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो वैल्यू आगे है ये वापस कहां जा सकती है? पावर में जा सकती है. 4 कैन गो इन द पावर ऑफ 3 एंड 2 कहां जा सकता है? x की पावर पे जा सकता है. ओके. सो वी कैन राइट दिस log of x square is equal to log of 3 to the power of 4. Now on comparing both the sides, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? log of x square है, राइट हैंड साइड में log of 3 to the power of 4 है. So on comparing, x square is equal to 3 to the power of 4. So what will be the value of x? X will be 3 square, that is 9. Okay, it will be 3 square, that is 9. तो ये आपका रिजल्ट हो गया, द वैल्यू ऑफ x. आप में से कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं. आई थिंक आपको थोड़ी देर बाद चांस दिया जाएगा सो दैट यू कैन स्पीक, और आप अपना कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं.
सो अभी थोड़ी देर बाद में आपको चांस मिलेगा, डू नॉट वरी। ऑलराइट, ओके, next one, question number 7. This is also a good question, and question number 8 is also similar. So let's try question number 7. Log of 64 to the base root of 2. Log of 64 to the base root of 2. नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है। एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ऑफ a to the base a is equal to 1. When the main value and base value both are same, the result is 1. So log 20 base 20 1, log 10 base 10 1, log 2 base 2 1. तो जब मेन वैल्यू एंड बेस वैल्यू दोनों सेम होगी, द रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तो अभी देखो, अभी आपके पास क्या है? मेन वैल्यू 64, बेस वैल्यू रूट ऑफ 2। तो 64 को हम क्या करते हैं? रूट 2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं? तो 64 मीन्स 2 to the power of 6, राइट? एंड इसको अगर हम रूट 2 की फॉर्म में लिखें तो इट विल बी रूट 2 टू द पावर ऑफ 12 बेसिकली। तो हमने लिखा लॉग ऑफ root 2 to the power of 12 to the base of root 2. Now 12 will jump forward. 12 कहाँ जाएगा? जो पावर में है वो log के आगे आ जाएगा। So 12 log of root 2 to the base root 2. So your result will be 12. So in this way you can get your result. Gaurav sir, Yes, sir. one question I would like to ask on behalf of students' point of view also, as well as the examination point of view also. Yes, sir. I request all the students, please keep silence while delivering lectures also. You are unnecessarily posting things among yourselves also. If you want to seriously pause, concentrate on lectures, you please raise your question related to subject point of view only. That is my personal request to all the students. One more thing here, the question number 11, you have already, this question is similar to the earlier questions are also, there is no problem on that point of view. Yes. Now I request the question number 17 is a very important question. This kind, if you understand this question, you can easily answer the similar kind of questions in the. Yes. Yes, sir. So let's move to question number 17. It's a very good question and एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और ये क्वेश्चन दिखने में मुश्किल दिखता है बट एक्चुअल में इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आती है। सो हम इस क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक log 2 base 10 is given as x. Log 2 base 10 is equal to x. This question has given. Redmi 9A is writing on the screen. Please do not write here. निसर्ग जी आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे लिखा है 8 एंड ये येलो कलर से जो लिखा है। log 3 base 10 is y. And then you have to express log 60 base 10. Okay, so log 60 base 10 इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है एंड इक्वेशंस आपको गिवन है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी राइट 60। तो 60 के फैक्टर्स हमने
लोअर क्लासेस में निकालना सीखा है, बिल्कुल वैसे हम फैक्टर्स निकालेंगे. 60 divided by 2 is 30, 30 divided by 2 is 15, 15 by 3 is 5, and 5 by 5 is 1. So all these are the factors of 60. So 60 can be written as 2 square multiply by 3 multiply by 5 multiply by 5. So if we take logarithm, on both the sides, we will get log 60 base 10 is equal to log 2 square base 10 log 3 base 10 and log of 5 base 10. Okay, we can write in this pattern. Even there is one more pattern. Now, if we write in this form, log 5 base 10 is cannot be properly solved. And as per the option, we are just having x minus y plus 1 or x plus y plus 1. That means it is completely solved. So for that thing, you can arrange in a proper pattern. So what you can write in one more pattern, like 60 is equal to 2 into 3 into 10. Okay. So if you write in this pattern, it will become log 60 base 10 is equal to log 2 base 10 plus log 3 base 10 and plus log 10 base 10. Now, as we know, the question has given that log 2 is known as x. The value of log 2 is x. The value of log 3 is y. And log 10 base 10, when main value and base value both are same, the result is 1. So this is your required answer. Log 60 base 10 is equal to x plus y plus 1. So in this way, we can solve such questions. All right. So this was question number 17. Now, there is one more pattern, that is a simplification of logarithm. How to simplify and get the final result. So let's take one more question from that, and this is a common doubt from the students also. So question number 20. Question number 20. 2 log of 5 base 10. So let's solve here only. Two log of 5 base 10, then log 8 base 10, and log of 4 base 10. Now, in order to simplify, what we can do is apply the property. So log of 2 will go in the power. So log of 5 square, that is 25 base 10, plus log of 8 base 10, and half will go in power of 4. So 4 to the power of half is 2. So log 2 base 10. Now applying the property number 1 and 2, that is the addition property and subtraction property. So addition, log of 25 multiplied by 8, and subtracted value will go in denominator, that is divided by 2 base 10. So 25 and 8 क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में रहेंगे. 2 is negative, it will come into denominator. So 25 multiplied by 8 is 200, divided by 2 is 100. So log of 100 base 10. 100 can be written as 10 square. So log of 10 square base 10. So your final result will be 2. So 2 will come forward. Log 10 base 10 is 1. Therefore, 2 is your final answer.
Okay, so Vaishnavi says done. Okay, next one. Any more doubt from this exercise? Let me know. Okay, some of the students are asking about question number 25 and 22. Okay. Is 8. इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है एंड log 2 base 10 is given in the question. Okay. तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, लेट अस अंडरस्टैंड. मिसर जी आप ये सारी एक बार रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रीन. ब्लू एंड येलो मार्क्स जो है. यस. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं. क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 25 टू द बेस 8. ये वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड गिवन दैट value of log 2 base 10 is 0.3010. तो ये आपका क्वेश्चन है. तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है हमें, लेट अस अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले बेस में आपके पास 10 गिवन है वैल्यू में. सो दो जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका भी बेस क्या बनाना पड़ेगा, 10. सो लेट अस अप्लाई द ब्रेकअप प्रॉपर्टी. log 25 base 10 divided by log of 8 base 10. तो आपने क्या किया, ब्रेकअप प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया. अब इन दोनों को पहले हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं एंड वी विल राइट डाउन द वैल्यूज. तो अगर आप log 8 base 10 को सॉल्व करते हैं, log 8 can be written as 2 cube. Now 3 will jump forward to 3 into log 2 base 10. Now value of log 2 is given in the question. कितना given है, 0.3010 multiply by 3. What you are getting? Point. How much? फटाफट से सॉल्व करके बता दो. 5 की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो 5 को हमने कैसे लिखा, 10/2. सो 10/2 करने के बाद log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने. तो log 10 base 10 माइनस log 2 base 10. तो इससे आपकी वैल्यू आ गई log of 25 की. आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द रिजल्ट. ओके, Thank you, Gaurav sir. थैंक यू सर. Now we request the students for any doubts related to this topic, like ratio, proportions, and logarithms. And in between, we can explain the students related to the topic of indices. What are the properties like law 1, law 2, law 3, law 4 are there. Yes. And we can just throw just properties of that and laws of indices like we can discuss also, and meanwhile whatever the students queries also we can solve. Now I request students may ask their queries are also. Mr. You can please carry on. Yes sir. So लॉगरिथम का जो हमने अभी देखा, इसका वेटेज एग्जाम में नॉर्मली रहता है आपका 2 मार्क्स और इवन 3 मार्क्स समटाइम्स. तो एवरेज 2 क्वेश्चंस लॉगरिथम के आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं. एंड इंडिसेस का भी जो प्रपोर्शन है एवरेज मार्क्स है, दैट इज अगेन 1 to 2 मार्क्स. तो ये तीनों चैप्टर्स जॉइंटली आपके 6 मार्क्स कवर कर लेते हैं.
तो लॉगरिथम भी हमने अच्छे से समझा। अभी हम आते हैं आपके इंडिसेस के ऊपर, लॉज ऑफ इंडिसेस बेसिकली। नाउ दिस टॉपिक इज अ टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एल्जेब्रा। जब क्लास 6 में आप लोगों ने एल्जेब्रा पढ़ना शुरू किया, वहां से ये एक एक करके लॉ हमारे लाइफ के अंदर आता है, और यहाँ पर सारे लॉज एक साथ हमें दे रखे हैं। तो लॉ ऑफ इंडिसेस बेसिकली है कि हम कैसे वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 4 को प्लस करना है, 4 + 4 + 4 10 टाइम्स 4 लिखा है, तो आप बार बार कैलकुलेटर पे 4 + 4 + 4 नहीं करेंगे। उसका एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? आपको 10 टाइम्स 4 प्लस करना है, तो सिंपली 10 × 4 यू विल गेट 40। तो ये आपका एक शॉर्टकट होता है। वैसे ही अगर आपको मल्टीप्लीकेशन है, 4 10 टाइम्स लिखा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 4⁻10। Okay, so the first law of indices is regarding a to the power of m multiplied by a to the power of n। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो व्हेन बेस इज सेम, जब दोनों का बेस सेम है, तो उसके पावर्स को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो a to the power of m plus n, a to the power of m plus n। सो रियल में अगेन आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखना अलाउड नहीं है। So a to the power of m multiplied by a to the power of n, it is equal to a to the power of m plus mn। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 to the power of 2 multiplied by 2 to the power of 3, so the result will be 2 to the power of 5। तो पावर्स क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। Then law number second is for division, a to the power of m upon a to the power of n। अगर ये डिवीजन में है, तो रिजल्ट क्या होगा? a to the power of m minus n, a to the power of m minus n। So if we have written 3 to the power of 6 divided by 3 to the power of 2, so the result will be 3 to the power of 6 minus 2, that is 3 raised to the power of 4। This is law number second। Then the third law is basically about a to the power of n, a to the power of m whole to the power of n। पावर के ऊपर भी क्या लगा है? एक और पावर लगा है, a to the power of m, एंड इस पूरे नंबर के ऊपर एक पावर है, दैट इज n का। तो ऐसे केस में क्या करना है? दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट विल रिजल्ट इनटू a टू द पावर ऑफ mn, a to the power of mn। So if we have given 2 cube whole to the power of 5, so it means 2 to the power of 15। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 15। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज लॉ नंबर 3। Then comes law number 4। लॉ नंबर 4 में आपको सिंपली स्प्लिट करना है। लेट्स से a multiply by b and whole to the power of n। That means ये जो पावर n है, this will be applied to both a as well as b। दोनों पे ये पावर अप्लाई हो जाएगी। तो a to the power of n multiply by b to the power of n। So let's say 2 multiplied by 3 whole to the power of 4। This means 2 to the power of 4 multiplied by 3 to the power of 4। तो ये पावर 4 दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। दिस इज सिंपली लॉ नंबर 4। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे
इजी क्वेश्चन और कंफ्यूजिव क्वेश्चन भी कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स को नॉर्मली लगता है। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या गिवन है? x रूट x is equal to x root x to the power of x. Find the value of x. इसमें इतने सारे x है कि एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको सॉल्व करें तो करें कैसे। तो चलिए अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब देखो एक छोटी सी चीज जो हमने बचपन से पढ़ी है, व्हेन बेस इज इक्वल पावर इज ऑल्सो इक्वल, ऐसा हमने कई बार पढ़ा है। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों जगह बेस क्या है? सेम, एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रूट एक्स का पावर कितना है? 1। राइट हैंड साइड में उसका पावर कितना है? x। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो व्हेन बेस इज सेम, पावर विल बी इक्वल। ऑलराइट, Dear students, right now we are unmuting all. You may raise your queries, but one by one with Mr. Aryan and Devendra Saini. Just we are unmuting, please. Sir, can you solve the question number 8, 14 and 30 of proportion? okay. Who is From asking? Mr. Devendra or who is asking, please? Devendra, Devendra. You are from which place? Haryana. Okay. We are noted, please. Thank you. Next further. Huh? next is Aryan. Aryan? Aryan, your doubt is, please? No, sir. It's all clear. Yeah, thank you. Okay. Mr. Devendra's doubt only, na? Then Anuja has raised hand. Anuja, you are from? Sir, I'm from Punjab. Okay, very good. Can Sir, you? I have a doubt in 23rd question from ratios chapter. Okay, 23rd question, ratio chapter. Okay. Sir, these four questions, I think so. Okay, sir. Yeah. Sir, I have also doubt in log chapter, question number 19. Okay, we will. First, let us look at this and one by one we will. Thank you, students. Okay, sir. Now, sir, please proceed to. Okay, sir. So ratio question number 8. Somebody has asked. 23rd. 23rd. Okay. Perfect. So this is proportion and then ratio we are moving 23rd. All right. So question number 23 says the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, reducing it to 1:4. Find out that number. तो आपको वो नंबर कैलकुलेट करना है। सो ओरिजिनली बिल्कुल इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज इन प्रोपोर्शन आल्सो। तो अब देखो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा हम इसको सॉल्व करते हैं। इट सेज द नंबर व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31, द रेशियो विल रिड्यूस टू 1:4। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करेंगे तो आपका रेशियो कितना बन जाएगा? 1:4 बन जाएगा। तो अब क्या करें, कौन सा नंबर आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। तो अगर आप वन बाय वन ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई विद ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन ए ट्राई किया, 15 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम दीज टू 19 एंड 31, तो 19 माइनस 15 गिव्स 4 एंड 31 माइनस 15 गिव्स 16। सो 4:16। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं
you will get 1:4. So therefore, your required number is 15. So 15 is your answer. That is option number A. Hope you understand, student. Yeah, you can further move to other questions, sir. Okay, sir. So then Devinder is asked from proportion. So Devinder, it was question number 8, right? Yes, sir. Okay. So it says A is equal to B by 2 is equal to C by 5. Then find out the ratios of A, B, and C. All right. So let us simplify here. A, B by 2 and C by 5. This is given. So A is having nothing in denominator. So A by 1 is equal to B by 2 is equal to C by 5. तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए? आपके पास देखो सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बस आपको सिंपली एक ट्रिक यूज करनी है, एक मेथड यूज करना है, जिससे आपका ये रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। तो ए बी एंड 5, ए बी एंड सी की प्लेस पे आप क्या रखें कि ये तीनों इक्वल बन जाए? तो आप सीधा ऑप्शन को देख, क्या करना है आपको? सीधा ऑप्शन को वॉच करना है कि क्या आप ऑप्शन रखोगे जिससे ये तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, 3, 5 एंड 2। ए की प्लेस पे रखा आपने 3, बी में रखा 5, सी में 2। क्या ये तीनों इक्वल बन रहे हैं? नो, रिमूव दिस ऑप्शन। बी आपने चेक किया, 2, 5 एंड 3, क्या इक्वल बन रहे हैं? नो। बट जैसे ही आपने थर्ड ऑप्शन रखा 1, 2 एंड 5, so 1 upon 1 is 1, 2 upon 2 is 1, 5 upon 5 is 1. That means now all these three are equal. Therefore, option number C is correct. तो simplest way है ये question को solve करने का. So this was question number 8. Next, I think it was question number 19, right? 14. 14. Okay. So 14 says x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 7 and find out this value. तो ये पैटर्न हमने जैसे किया था एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है. लेट ऑल दीज वैल्यूज बी इक्वल टू के. इन सबको आपने किसके इक्वल टू ले लिया? के. ये सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है मैंने. तो x by 2 is y by 3 and is equal to z by 7 इक्वल टू आपने किया के. नाउ कंपेयर 1 by 1 with k. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2k. y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 into k. एंड z कितना होगा? 7k. तो आपने x, y, z सबको कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ k. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो आपको फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है. तो 2x, x की प्लेस पे आपने पुट किया 2k, माइनस 5y, y की प्लेस पे आपने पुट किया 3k, एंड प्लस 4z, तो z की प्लेस पे आपने पुट किया 7k, डिवाइडेड बाय 2y, सो 2 into 3k. नाउ ऑन सॉल्विंग, जैसे आपने सॉल्व किया, k फ्रॉम न्यूमरेटर एंड k फ्रॉम डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड एंड यू आर गेटिंग 17/6. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहेगा. ओके, then Thank you, sir. Nice explanation. Hope student can understand this. Ishika, you have further any doubt? Yes, Question sir. number From logarithm. Pardon? Sir, question number 30. Question number 30. Mr. Devendra, you are asking in which chapter? Proportion only. Proportion only. Question number 30. 13th. 13. 30. 30. 30. Okay. Okay. All right. This is a Again, simple one. yes. So this question looks tricky, looks difficult, but it is not much difficult. You What follow we the similar say technique like same Yes. like ratio proportion, assuming all equal to k only.
Yes, you have to keep them equal to equal to k, and put the value. All these will get cancelled. सब आपस में कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका 0. So this is the most popular trick. Then Parul was asking something. Parul? Parul, please. Yes, sir. Can you, yeah, your query, please. Sir, I have a doubt in exercise 1D 22 question. 1D. These like logarithms. Yes, sir. 1D 22, question number 22. It is a lengthy question. 4 into fourth root of 729. Yeah. Yes, fourth root of 729, then cubic root of this, Yes. and then you have to calculate this logarithm. Okay, so let's write here. If you are already solved, just to throw him and just show him the quickly the example. How can they can? Yes, sir. Yeah. I think it has to be solved. It is not available here solution. So actually it is basically a fourth root. Fourth root का मतलब होता है आपको 2 times क्या करना है, square root करना है. So I have to solve here only. Okay. By that time, sir. Hello. Yes, sir. If anybody have other simple questions or anything, Okay. yeah, we can move to this one also. There is no problem. Further, anybody have other any small doubts or like any kind of things? Please write it. Raise your hand. Yes, Sir, sir, I question have number doubt. 19. Yes, Ishika. Sir, I have doubt in 21st question of logarithm. 21st question. Okay, these are all application point of expansion point of view only. Okay. Yes. Next further. Sir, question number 19. Question number 19 already explained, I think so. 19 is similar to what we have covered. Yes, it is similar to question number 17, 18. So all these All three are similar kind of questions only. Sir, question number 27. Okay. One more request to the students. If you have, please note any kind of queries, you can post here also. You can send by mails also be. There is no issue on. We are here to support your all students only actually. Okay. Don't feel fear or any kind of things also be. And you may post to the board of studies also be your queries. Note down my mail ID also, nvravi@ici.in also be. You can send me mail or within 1 or 2 days, we will reply also be. There is no fear on that part. Please send, and we are here to help as many students and get involved in these lectures, and they can be passed out also be. Further, please, sir. Okay. Mahi, you are asking something? Yes, sir. Question number 21 from Indices chapter. From indices? Yes, sir. Okay. So let me take 21st question from this first and then from indices. So this is a very good question, which is here. Log of this. So let's do it here quickly. So 21 log, then bracket 1 minus, again bracket 1 minus x square, whole to the power of -1, again to the power of -1, and then to the power of -half. Now ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम द मिडल, जहां से आपका वो पावर स्टार्ट हो रहा है. तो जब भी पावर में -1 है, व्हेन पावर इज नेगेटिव,
दैट मीन्स यू हैव टू रेसिप्रोकल दैट टर्म, तो वो टर्म आपको रेसिप्रोकल करना है। तो इनिशियली बाकी सारी वैल्यू सेम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल टेक द एलसीएम, सो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 1 upon 1 minus x square whole to the power of minus 1, and then this is half. Now you can see that 1 and minus 1 will get cancelled, and इस ब्रैकेट के ऊपर अगेन एक और पावर है, वो है माइनस 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, so it will become log of 1 minus x square upon minus x square, and minus minus will become plus. So again you will take the LCM, तो फिर से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, log of x square plus 1 minus x square upon x square, so x square will get cancelled. So अभी हमारे पास क्या आ चुका है, log of 1 by x square and whole to the power of minus half. So again पावर नेगेटिव है, तो फिर से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, so you will write log of x square to the power of half. Now this power 2 and half will get cancelled, so what is the result, log of x is the result. Okay, तो ये डाउट किसने पूछा था, so this is solved now. Okay, sir. Thank you. Okay, Shikha. Sir, question 27 of indices. Okay, so indices में एक 27 Please asking. 21. Okay. Okay, so question number 27. If x equal to 3 to the power of 1 by 3 plus 3 to the power of minus 1 by 3. This Yes, is sir. algebra by cubing on both sides, and you can easily You can get easily the answers. Yes. Yes, please quickly answer this question. So If they you have, can they understand the simply, formula related to the if they know the a cubed minus b cubed, sorry, yes, a minus b whole cube, they can easily you understand. can easily solve. So you have to simply just apply that formula, a plus b in whole cube, like taking cube both the sides, you can do it, and after taking cube you will get this as your result. तो आप उसका result आपका directly सामने आ जाएगा. You can take screenshot and apply the formula that a minus b whole cubed. Right. A cubed minus b cubed minus 3ab into a minus b. And Yes. also there is one shortcut which is available here. That is 3 power 1 by 3 plus 3 to the power of minus 1 by 3. And then when this is kind of thing is required, the shortcut method is simply a square plus 1. What is a here? Basically, everything is written in terms of 3. So 3 square plus 1, that is 10. So this is the shortcut which was available here. Otherwise, you can solve by taking cube both the sides. Thank you, student. Thank you, sir. Hope you understand. And sir, Yes, sir. we come to the just with our experience, and we will give some guidance about the whole chapter, about the what kind of questions are coming, and if they have any queries also, they can feel free to ask here, or they can send mail us also. There is no Okay. problem. We are always available and to guide them also. Yes, sir. And this topic is a ratio, proportions, indices, and logarithms. This is a very simple and easy chapter also. You also know very well. Actually, we are all studying for last many years. Actually, the students are also, we are guiding them also. My question is actually to the students, what are the basically they are facing the problems in the questions actually.
they have problem in the ratio, they have problem in the proportions, and properties related to proportions, and indices means the properties of indices, and that is like a laws of indices. We called as laws of indices, and this is a base for the equations, and we may apply in all the algebraic chapters or also be. Then the same logic is used in the several places in the arithmetics also be, and for the logarithms are also be very important. If you sum up all these chapter, each one, that is sometimes logarithm, loss of indices, proportions, two questions are also sometimes asking, or indices, two questions are also being sometimes, and ratios, one question. Overall 6 to 7 or maximum 7 or 8 also be asking, but you keep it in mind, 6 questions is a very important questions from this chapter. Now I request Chopra ji, you can throw your some kind of experience, please. Yes. So overall, these three topics are basically scoring chapters, and these are not much time consuming. So basically, all these three topics help us to score good marks, especially in maths. तो 6 marks आपके एवरेज यहाँ पे एग्जाम में आ ही जाते हैं. इन चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं आते हैं, इजी रहता है. और जो क्वेश्चंस आपको यहाँ एक्सरसाइज में जिस तरह के दे रखे हैं, यही पैटर्न आपका ऑन एन एवरेज एग्जाम में आता है. ऑफ कोर्स वैल्यूज नो डाउट चेंज होगी, बट यस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड जो पैटर्न है आपका वो इसी तरह से रहता है. तो सबसे एक कॉमन फोबिया रहता है स्टूडेंट का कि लाइक किसी की क्लास 11th एंड 12th में मैथ्स था नहीं था, डजंट मैटर. यहाँ पे जो हम सेशंस लेते हैं, जो भी आपके रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, ऑल दीज आर फ्रॉम बेसिक फ्रॉम स्क्रैच. तो आप उसको स्टार्टिंग से गो थ्रू कर सकते हैं, एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दैट उसके बाद आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन ईमेल टू अस. आप ईमेल पे पूछ सकते हैं. इस तरह के जो लाइव सेशंस होंगे उसमें आप पूछ सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे. एंड वी आर हियर टू हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स, फुल मार्क्स. तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है आपके लिए, राइट. अदरवाइज ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, स्कोरिंग है. थोड़ा सा फोबिया जरूर लॉगरिथम के साथ में रहता है, बट आपको अगर जो रिकॉर्डेड सेशन है उसके थ्रू आप जाएंगे, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लगी. ओके, सो आई होप आपके जो सारे डाउट्स है वो आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और इसी तरह से जो है इंटरेक्शन है हमारा और चलता रहेगा फ्यूचर में भी. बट आपको अपनी स्टडीज रेगुलर रखनी है, स्पेशली इस सब्जेक्ट की हम अगर बात करते हैं. यू हैव टू. यस सर. Parul and Abhinandan Saini has raised some questions. Just we look at and further. Okay, sir. Yes, Parul. Yes, Parul. सर लाइक हम अगर बॉस ऐप पे कैसे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं? क्या बेटा? जो बॉस ऐप पे हमने क्वेरी सेंड करनी है तो वो कैसे सेंड करें? यू कैन ईमेल. आप ईमेल कर सकते हैं. जो भी आपको एक ईमेल आईडी से नोट करवाया है, आप उसके ऊपर अपना ईमेल. You can send me mail also be person and my the institute mail ID also nvravi@ica.in. I can reply also. Okay, sir. Or you can call also landline mobile number. I am sharing 01203045 949. Okay, sir. Monday to Friday Sir, available. again same number. 0120 3045 Yes, sir. 949. Hello. And Yes. Hope you noted. Yes. Anybody else? Mr. Yeah, Abhinandan. Yeah, can Number 29 of indices. Pardon? Sir, question number 29 of indices. 29 of indices. This is a very simple sum. Very simple sum. Yes, sir. Quickly, just explain Yes. this. So see, whatever in this question, x to the power of a upon x to the power of b and then whole to the power something is given.
So in this case b will go up, b ऊपर आएगा, b जैसे ऊपर आएगा तो x की पावर में क्या बन जाएगा, देखो मैंने साइड में लिख रखा है, x की पावर में आ जाएगा a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपने फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व किया, क्या आ गया, x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली सेकंड पोर्शन आपका आएगा b क्यूब माइनस c क्यूब एंड थर्ड पोर्शन विल बी c क्यूब माइनस a क्यूब। नाउ ऑल दीज थ्री आर इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो जब बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। और जैसे आप पावर्स को ऐड करेंगे a क्यूब b क्यूब c क्यूब सब की सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट रिजल्ट x टू द पावर ऑफ 0 दैट इज 1। किसी का भी पावर 0 1 होता है। Thank you, sir. ओके so I think Thank you all the students who are joined in this today's session. Now I thank to the Gaurav Chopra ji also be very nicely explained all the important sums are also. रेशमा फर्दर क्या डाउट है बताइए। हेलो रेशमा यू कैन आस्क। रेशमा आपने हैंड रेज किया है? नो। Okay, fine. Thank you all of the students who are joined. Now, yeah, Rishabh Kumar Chaurasia. Thank you. सर लैंडलाइन नंबर बताइए सर एक बार। 0120 यस सर। 3045949. You can call Monday to Friday, 9:30 to 6 p.m. Our mail ID also I am giving. This official mail ID nvravi@ica.in. You post your queries related to subject. Feel free to contact. Thank you, Gaurav sir, once again for Thank you. your nice sparing time with us, and thank you all the students. Okay.